Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm here explaining this place. This is such a beautiful place. I'm here in Rishikesh. So this is the place. This is a waterfall nearby Rishikesh. It's really beautiful. I must suggest you people to visit this place. So see, this is how beautiful it is. So this is the kind of cave I entered in, and now I'm getting back. So I just told you, I'm just explaining this place because this is one of the activities you can do when you get out, and you can explain the things happening around you. You can explain whatever is going around you. So I can see beautiful trees here and beautiful birds and the sound of the water. It's amazing. So here I am, you can see. You know, I've often experienced such places because I'm from this place. So I belong to a place which is little far from here. Though I have spent 2 years of time in Delhi, but still I really enjoy the time here. So here I'll just sing 2 lines for you people. हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारों में यहाँ मौसम जाड़ों का. So here is a small kind of stall, and here people are having snacks and having fun. So why I'm shooting this video is I'm telling you how you can capture your memories this way and work on your English as well. Explain the things, some small things you can explain and capture it. It will really help you because you know nature gives you refreshment. Your brain will be relaxed and you are enjoying the time, the weather, the place. So you can speak on small topics and shoot yourself. This is how. सो आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है. जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं ना, कहीं पे भी आप जाते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप जो कुछ हो रहा है आपके सामने उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसी से तो आप इंग्लिश में सोच पाएंगे. जहाँ भी आप जाते हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए. जो हो रहा है आपके इधर उधर, लोग चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई दुकान खोल रहा है, यू नो, आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो सभी पूछते हैं कि इंग्लिश में सोचे कैसे. सो जब भी आप कहीं जाते हैं सो इसी तरीके से आप दिमाग में सोच सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है आपके इधर उधर. आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश किया कीजिए. इट विल रियली हेल्प यू सो मच. ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है. इसीलिए आज मैं ये वीडियो यहाँ पे शूट कर रही हूँ ताकि आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे पाऊँ कि इस तरीके से आपको अपने मोमेंट्स को कैप्चर करना है और इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है. इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए. कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना भी पड़ता है. सो दैट्स ऑल.